once you got N naught, you can find C1, C2 such that Fn lies between C1Gn and C2Gn. So this is the equation of theta notation, and this is for average case analysis. Average case analysis के लिए आप theta notation use करते हैं. So we will take care of one example of it right now. Theta notation का example अभी देखेंगे. We have an example based on theta notation like this. क्वेश्चन आपको इस तरह से गिवन होगा. गेट में भी क्वेश्चन आपको इस तरह से इक्वेशंस गिवन होगी, इस तरह से इक्वेशंस गिवन होंगी, और वो पूछेगा वेदर दिस इक्वेशन इज ट्रू और फॉल्स. इस तरह की आपको इक्वेशंस गिवन होंगी और वो पूछेगा आपसे वेदर दिस इक्वेशन इज ट्रू और फॉल्स. अभी हम गेट का क्वेश्चन देखेंगे. पहले भी ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. तो मैं आपको एक सिंपल वे में मेथड में दिखाऊंगा और दूसरा एक ट्रिकियर वे में दिखाऊंगा. तो इसे हम ट्रिकियर वे में भी प्रूव कर सकते हैं. वी हैव अ ट्रिक फॉर दिस. वी हैव अ ट्रिक टू डू दिस. ओके, नाउ to do this we have, so this part, this is Fn here, this is Fn and this is Gn. So in this case Fn is, in this case Fn is half n square minus 3n and Gn is n square. Now putting this thing in the equation of theta notation, we will have C1 Gn, that is C1 n square less than equals to Fn n square minus 3n less than equals to C2 n square. We have this equation. Now dividing n square, the whole equation, we will get C1 half minus 3 by n C2. So we will have, now we have this equation. Now we have to solve this equation. Now हमें क्या करना है? As I have already discussed, मुझे क्या करना है? मुझे C1 याद कीजिए. C1 is lower limit, तो मुझे C1 चाहिए. I need C2. C2 is upper limit. तो मुझे C1, जो भी मिनिमम C1 पॉसिबल है हो सकता है वो चाहिए. C2, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल C2 हो सकता है वो चाहिए. Is it clear? I need C1 that is maximum possible C1. I need minimum, because C1 is lower limit. So I need lower limit कितनी हो सकती है? Lowest limit देखनी है मुझे. तो I need minimum possible C1 and I need maximum possible C2. So check for these things. So for C2, पहले C2 के लिए फाइंड करते हैं. I have equation 1 by 2 minus 3 by 9 greater than equals to C2. So in this case I need C2 to be a positive constant, as C1, C2 and N0 all three lies in quadrant 1. So they need to be positive. All these need to be positive. So positive होने के लिए C2 true. So for C2 to be positive and maximum, हमें n की वो वैल्यू रखनी है so that we get C2 maximum and positive. So अगर मैं यहाँ पे n की यहाँ पे क्या वैल्यू रखूं जो मेरे को C2 पॉजिटिव मैक्सिमम पॉजिटिव इस इक्वेशन से मिले. देखिए मैक्सिमम पॉजिटिव इस इक्वेशन से क्या मिल सकता है? आपके पास 1/2 है. 1/2 में से हाफ में से कुछ माइनस हो रहा है. अगर मैं इस थिंग को, अगर मैं इस फैक्टर को 0 कर दूं टोटल, तो मुझे क्या मिल जाएगा? हाफ. और यहाँ पे मुझे C2 मैक्सिमम कितना मिल सकता है? 1/2. C2 मैक्स एक्चुअली में कितना मिल सकता है? 1/2, बिकॉज 1/2 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है. और अगर जो चीज सब्ट्रैक्ट हो रही है मैं उसे कंप्लीट चीज को 0 कर दूं तो मुझे C2 क्या मिल जाएगा? 1/2. तो इन दिस केस कैसे मैं प्रूव कर सकता हूं? put n is equal to infinite. Put n is equal to infinite, I will get 1/2 minus 3 by infinite C2. That means I will get, or something by infinity is 0. So I will get C2
C2 max, मैंने अपर लिमिट का जो कांस्टेंट फैक्टर था वो गेन कर लिया, ठीक है। नाउ आई हैव टू फाइंड C1. नाउ माय टास्क इज टू फाइंड C1. नाउ for C1, okay, for C1 I have equation C1 less than equals to 1 by 2 minus 3 by n. So I need to find, because C1 is the lower limit, C1 is the lowest limit, so I need to find C1 to be a minimum possible positive constant. Done. I need to find C1 as minimum possible positive constant. That is the main thing. मुझे C1 जो चाहिए वो मिनिमम पॉसिबल पॉजिटिव कांस्टेंट चाहिए। और मैं कैसे सपोज देखिए यहाँ पे अगर अब मैं n की यहाँ पे क्या वैल्यू रखूं तो मुझे एक पूरा फैक्टर कम से कम मिले लेकिन पॉजिटिव मिले। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ पे 7 रख देता हूँ तो ये फैक्टर जो होगा, ये वाला फैक्टर n की पावर 7 रखते ही, सॉरी n की पावर 6, n की अगर मैं n की जगह अगर 6 रख दूंगा तो ये फैक्टर मुझे क्या मिल जाएगा, 0। अगर मैं यहाँ पे n की जगह 6 रख देता हूँ तो ये वेक्टर मुझे क्या मिल जाएगा, 0। भाई एंटी 6 लिख के 0, लेकिन मुझे क्या चाहिए पॉजिटिव कांस्टेंट। तो अगर मैं if I put n is equal to 7, I will get C1 1 by 2 minus 1 by 7, that is C1 min। तो C1 min मुझे क्या मिल गया, C1 min मिल गया 1 by 40। और कोई बच्चा देखे तो मैं C1 min और C2 max कहां से n की किस वैल्यू से बना पा रहा हूं, ये देखिए यहाँ पे n is equal to 7 है और यहाँ पे n is equal to infinity है। दैट मींस मैं जो बिहेवियर प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं इस इक्वेशन का, मैं जो इस इक्वेशन का बिहेवियर प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं कहां से कर पा रहा हूं, n is equal to 7 से n is equal to infinity तक, n is equal to 7 से n is equal to infinity तक मैं इस इक्वेशन का बिहेवियर प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं। तो मुझे n नॉट की वैल्यू क्या हुई, मेरी n नॉट की वैल्यू हुई 7। दैट मींस क्या, 7 टू इंफिनिटी, 7 से तो 7 पे तो मुझे मिनिमम मिल गया और इंफिनिटी तक में सारी वैल्यू, तो n नॉट इज इक्वल टू 7, n इज इक्वल टू 7 विल बिकम n नॉट। n की वैल्यू 7 वो वैल्यू है जहां से मैं इस इक्वेशन का, इस फंक्शन का बिहेवियर प्रेडिक्ट कर पा रहा हूं, ठीक है। तो दैट्स इट। नाउ आई हैव फाउंड, अब मेरे क्या हुआ, मैंने इक्वेशन में अपना C1 फाइंड कर लिया है, मैंने इक्वेशन में अपना C2 फाइंड कर लिया है, मैंने n नॉट फाइंड किया है, हेंस दिस इज ट्रू। वी कैन रिप्रेजेंट हाफ n स्क्वायर माइनस 3n इन टर्म्स ऑफ थीटा ऑफ n स्क्वायर। दिस इक्वेशन होल्ड ट्रू। तो दिस इज द मेथड नंबर 1। लॉन्ग मेथड, सपोज कोई इक्वेशन थोड़ी सी टफ हो गई, ट्रिकी हो गई, तो दिस मेथड टेंड्स टू बी वेरी हार्ड, दिस मेथड टेंड्स टू बी टीडियस और हार्ड, so we need some more trick, and yes we have a trick। So trick for this theta notation की ट्रिक जो होगी वो थीटा नोटेशन वो ये होगी, if limit n tends to infinity fn upon gn, if it comes out to be a constant, this will be a trick। if fn, if limit n tends to infinity में if fn upon gn comes out to be a constant, then that particular equation will hold true। so वो equation क्या होगी, true होगी। we will see। now again repeating that particular example, n square minus 3n is equal to theta of n square। Here we have fn is equal to n square minus 3n, and we have gn is equal to n square। Putting it in this formula, limit n tends
tends to infinity fn upon gn. To take in this formula we have, this implies limit n tends to infinity fn is half n square minus 3n upon n square. We will have limit n tends to infinity dividing by n square, we have half minus 3 by n. We will have this equation. Now put n is equal to infinity in this equation. We will have all this limit, putting limits, we will have 1 by 2 minus 3 by infinity, and something by infinity is 0. Minus 0 is equal to half. That means a constant. और आपको पता है, if limit n tends to infinity fn upon gn, if it is comes out to be a constant, then yes, it holds true. That means this equation is true. This equation is true. This was the concept of, this was the trickiest contest of theta notation. एक आपके पास मेथड है जिसमें आप C1gn greater than equals less than equals to fn less than equals to C2gn वो वाली इक्वेशन लगाएं, और आप अगर C1 C2 और n नॉट पॉजिटिव कांस्टेंट पा रहे हैं, C1 should be minimum possible positive constant and C2 should be maximum possible positive constant, और n नॉट अगर आप निकाल पा रहे हैं, अगर ये तीन वैल्यू आप निकाल पा रहे हैं, then that particular equation holds true. और second method, the trickiest method, this is a trick. लिमिट का कंसेप्ट लगाना है. If limit n tends to infinity fn upon gn, if it comes out to be a constant, then say in this case, if that particular comes out to be a constant, then that particular equation holds true. So this is the part for theta notation. Now second notation.